Hello, everyone. Good evening. Welcome to 5 Paisa. So we should just wait for some time. हम वेट करते हैं. We'll join for another 1 minute so that लोग join कर सके. चलिए, तब तक मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. मैं हूँ देवांशी आशर, योर होस्ट फॉर टुडे फ्रॉम 5 पैसा. एंड मेरे साथ है आज मॉडर्न एल्गोस से संजय बेद. संजय को 15 ईयर्स से भी ज़्यादा का मार्केट में एक्सपीरियंस है. ही इज़ अ CFA एंड CMT. व्हाट अमेजिंग कॉम्बिनेशन दैट इज. संजय, गुड इवनिंग. एंड Thank you. सबसे पहले तो आज जो वेबिनार है उसमें जो मेन पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मॉडर्न एल्गोस के थ्रू आप कैसे एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं. व्हाई एल्गो ट्रेडिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट, एल्गो ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या एंड हाउ एग्जैक्टली कैन यू मेक स्ट्रैटेजीज एंड कितना आपको बेनिफिट होगा, ये सब हम इस वेबिनार में कवर करने वाले हैं. सो आर यू गाइज एक्साइटेड? गिव अस अ thumbs up, leave us a post, leave us a comment in the comment section. एंड अगर आपके बीच में जब वेबिनार में हम बात कर रहे हैं तब आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें ये जो क्वेश्चंस हैं वो शूट कर सकते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द वेबिनार वी शुड टेक अप ऑल योर क्वेश्चंस. सो संजय, अगेन गुड इवनिंग. हाय, वेलकम टू 5 पैसा. सबसे पहले तो ये बताइए कि CFA देन CMT, सो फाइनली अब आप जब 15 साल का आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, सो व्हाट डू यू नाउ ट्रेड इनटू? लाइक आप फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल से आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बट एक्चुअली आपने तो अलग ही रूट ले लिया. नाउ यू इनटू एल्गो. First of all, thank you very much for having us for this webinar. Yeah, the combination, like I did CFA long back in 2007 and 8 when we were in doing most of the things in commodities and building the baskets, portfolios. Then in 2017, I thought like now the market would be moving towards system-based trading, algo trading, क्योंकि मार्केट इतना इवॉल्व हो रहा है एंड डे बाय डे सबको ईज ऑफ लाइफ चाहिए. एंड लाइक आई पुट माय 10 स्ट्रैटेजीज, सबके अपना स्टॉप लॉस टारगेट डिफाइन हो एंड देन एवरीथिंग विल बी ऑटो मैनेज्ड. सो धीरे धीरे उसकी नीड लगी. देन आई इंक्लाइन टुवर्ड्स डूइंग CMT बिकॉज दैट shows a different aspects towards system building, model building, and how you can have your system and then automate it so that you'll be able to out of the greed and fear during the market arts. So yeah, it's been a journey, and market always teaches you always have to learn from the market. ऑलराइट, कमिंग टू एल्गो ट्रेडिंग. जब हम एल्गो ट्रेडिंग की बात करते हैं तो एवरीवन नोज दिस कि ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है. बट एग्जैक्टली एल्गो ट्रेडिंग में कैसे स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं? एंड सबसे पहले तो व्हाई एल्गो ट्रेडिंग व्हेन यू कैन डू इट मैन्युअली? एल्गो ट्रेडिंग का एक मिसकंसेप्शन ये है कि सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा. सब कुछ ऑटोमेटिक कभी भी नहीं होता है. आपको अपना ऑब्जेक्टिव, अपना रिस्क प्रोफाइल, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, ऑल यू नीड टू नो. एल्गो ट्रेडिंग आपको क्या हेल्प करेगा कि आपका जो भी स्ट्रैटेजी है मैनुअली जब एंट्री करते हो, दैट टाइम यू हैव वन माइंडसेट. वंस यू एंटर्ड इनटू मार्केट एंड मार्केट वेदर इट मूव्स इन योर फेवर और गोज अगेंस्ट यू, your mindset will keep on changing it. To avoid that kind of scenario, if you can configure everything at a time of entry, that will really help you to maximize your returns. Not maximize, you'll be also be able to be consistent in the market, and you'll be able to take away certain percentage on each of your trade. That can only be done when you have everything predefined, and you know that if at the time of entry I had this much of target parameter, this much of risk parameter, and if you combine all of them at a time of entry, then definitely end of the day you'll be able to take something home. And if you do it consistently, it's not that one day you do it and then you go to manual. जो भी करोगे आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा. एंड एक सिस्टम ही आपको इसके बारे में हेल्प कर सकता है कि हाउ यू कैन पिक द स्ट्राइक, how you can manage your profit, how you can lock your profit. So all of those features we are going to discuss in this webinar, and how modern algos can also help you to define all of these features at the time of entry point, and how you can have various default strategies which you can directly deploy in the market.
So we are going to explore all of those options at Modern Algos. ऑलराइट, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं 5 पैसा के क्लाइंट्स को भी ये बताना चाहूँगी, एंड फॉर दोज पीपल जो अभी भी 5 पैसा के क्लाइंट्स नहीं हैं और वेबिनार को वॉच कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, अगर आप 5 पैसे को लाइक उस प्लेटफॉर्म पे हैं, एंड अगर आप ये भी चाहते हैं, क्योंकि ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजीज भी जानना चाहते हैं एंड यू वांट टू मेक इट ऑटोमेटेड, यू वांट टू यूज द एल्गोज, आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं, देन मॉडर्न एल्गोज विल बी हेल्पफुल, एंड ये आपको 5 पैसा के जो ऐप है वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगा, एंड यू कैन कनेक्ट इट एंड यू कैन एक्चुअली बैक टेस्ट योर ट्रेड्स, एंड देन आप उस पर ट्रेड्स ले सकते हैं। हम आपको इस वेबिनार में ये भी बताएंगे हाउ यू कैन डू इट। सो लेट्स स्टार्ट, आई जस्ट एड द प्रेजेंटेशन। यस संजय, संजय बताइए, So सबसे for पहला जो स्टेप होता है वो क्या होगा? सबसे पहले स्टेप ये होगा कि आपके पास मार्जिन कितनी है, आपका कैपिटल कितना है, उस कैपिटल पे आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं, उसके बेसिस पे यू कैन फाइंड वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड देन यू कैन ऑटोमेट इट. So should I share my screen first so that I'll be able to showcase the platform and we'll drive from there? ओके, ओके, All right. So the first thing we have to show, how do I connect to Modern Algos from 5paisa? You can see my screen. yes, I'll just add it. Yeah, Yeah, it's visible. yes, it's visible. Okay. So to connect 5paisa, it's very simple. आप login पे click कीजिए, 5paisa के icon पे click कीजिए, you enter your client code and password. Once your login is successful, you will be redirected to Modern Algos product page. We have various products, but in this webinar, we are specifically focusing only on option strategies and how you can find various default strategies और फिर उनको automate कैसे कर सकते हैं. So that is our agenda for today's webinar. So should I start off with the product integration, Devanshi? Sure, sure. All right. So in algo trading, we have 5 different products. इसके पीछे objective क्या है, that I want to tell it to you guys for a minute. जब रिटेल यूजर्स मार्केट में इन्फॉर्म डिसीजन पाना चाहते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मीनिंग लाइक इफ आई लॉग इन एट 12 o'clock in the afternoon and I want to see what are the opportunities in market and I want to do something in option strategies. So एक प्लेटफॉर्म आपको ऐसा मिलेगा, एक प्रोडक्ट व्हाट यू गेट एट मॉडर्न आल्गोस कॉल्ड स्प्रेड स्ट्रैटेजीज. ये टाइम बेस्ड है. यहाँ पे हर 10 मिनट में हम स्ट्रैटेजीज को स्कैन करते हैं और with the predefined risk reward ratio and probability of success is more than 65% in our historical test for last 6 months, वो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे लिस्ट करते हैं. तो अगर आपको जब भी फ्री हो between 12 to 3 or somebody may have a different time frame when they want to trade and they want to take out certain strategies like ये भी कौन से strategy या कौन से combinations है which I can easily find and then I can deploy in the market. So uske liye you can come to spread strategies. Every 10 minutes we are scanning various strategies for you in Nifty, Bank Nifty, various stock options. Those you can see here and then you can analyze those strategies or you can paper trade also from here. So that we will cover a little later. So this I just wanted to tell you that if you are an option trader, the first and foremost thing is that अभी opportunities क्या क्या है. अगर आपके पास खुद की strategy नहीं है, आपको ऐसा चाहिए कि I want to see what are the combinations or best possible combinations क्या बन सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में और stock options में, that you can simply find on a single page. That is spread strategies. Now let's say you normally do a default strategy meaning the commonly used strategies in options like
बटरफ्लाई, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल। सो ये स्ट्रैटेजीज में अभी वो डिफरेंस आर वी मेकिंग एट मॉडर्न आल्गोस। ये अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो देन डेफिनेटली यू आर अवेयर अबाउट दी स्ट्रैटेजीज, द बेनिफिट्स, व्हेन दे शुड बी डिप्लॉयड, कौन से मार्केट ट्रेंड में क्या करना चाहिए। दैट इज नॉट एन एजेंडा टुडे। अपना एजेंडा ये है कि अब अगर अगर इफ आई डू अ शॉर्ट स्ट्रैडल, इफ आई एम डूइंग अ बुल कॉल, how I ओके, can automate it, and ठीक है। how I can ensure that at the time of entry I configure everything. So modern algos पे हमने क्या किया है कि we have listed down all the default strategies what you can see on the top of the page, and you can do it intraday and positional both. So now let's take an example कि आपको let's say today the market was around 17,700 for good amount of time, and then around 1:30 we saw that in intraday we saw that okay market is turning back. And that time if you want to see what are the best combinations where I want to enter into bear put spread, so जैसे ही आप वहाँ पे bear put spread पे क्लिक करोगे उस टाइम जोन के बेसिस पे कौन सा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है विल बी ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड ऑन द स्क्रीन। इफ यू सी हियर this combination will get populated now since it's ओके, post 3 o'clock. संजय आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करना पड़ेगा बिकॉज स्ट्राइक प्राइसेस आर नॉट विजिबल। Okay, I think now it's fine. फाइन, Okay, अ लिटिल बेटर, so ओके। ओके। तो ये जब आप वहाँ पे उस 1:30 या जो भी टाइम फ्रेम पे आप क्लिक करोगे उस टाइम फ्रेम के बेसिस पे आपको यहाँ पे स्ट्राइक पॉपुलेट हो जाएगा। आपके ओके, पास एक चॉइस भी है कि इफ यू वांट टू मॉडिफाई दिस स्ट्राइक प्राइस यू कैन डू इट। एंड एक बार सपोज let's do it in the next week so that we get update on the prices, and I click on. Okay, so now you can see different prices here because uh, today is expiry, so everything became 00. Now you can see the prices are populated here. Now you, if you want to check the payoff chart, you can also do it from here. On a click of button, you will be able to see the payoff chart, what is the margin required, what is the minimum investment required, risk reward, all of those information will be in front of you. So these things will help you to take a decision faster. हम्म, And any minute or any time you're saving while entering into the market will definitely help you in maximizing returns, because if you delay in the analysis, if you delay in finding the information, then your entry may also be delayed. So this will help you to find everything on a single page with all the details which are required before you enter into the strategy. ओके। Now let's say you thought okay the Also, market. Sanjay, I'm sorry to interrupt. Jitendra Mhm, Singh का एक क्वेश्चन है, if you can also watch it in the comment section side में. He wants mhm. an algo. Can you show it online with strategy, as in Bank Nifty trade in ATM and in the money? 1 minute is little difficult, but when the price closes above the super trend of 4 2 settings, keep a stop loss of 30 points and trail the stop loss increase in the price. Now I couldn't understand the 4 2 settings for sure, No, what but he's this saying, he's asking for a rule-based system, wherein like right. if you do something on indicator and then once that indicator breaks, then you probably enter and then manage your position based on the indicator move. We do not have any indicator-based solution at Modern Algos because our objective is to provide the automation and for the entry, and probably you'll have your own criteria, or we can help you with finding the right selections. Though what he's asking for is definitely in our plan of action, we are working towards that, that we should also have indicator also inbuilt in the system. Right now that functionality is not available at Modern Algos. So what I was referring to, that if you want to let's say you have entered your strategy here, now you Okay. want to manage this strategy, and you want to define your leg wise and strategy wise target, stop loss, trailing target, trailing stop loss, all of that you can predefine here. I'm just giving a hypothetical example, I'm just trying to explain the features. फिर हर बंदे का अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा, हर बंदे का अपना एक मार्केट के लेके एक आउटपुट रहता है, एक एक थॉट प्रोसेस रहता है, दैट हाउ यू वांट टू
use that particular market trend, or how he wants to manage the position, that depends upon one to one objective. हियर Okay. अगर अगर आप ये बोलते हो कि ये मैंने 236 236 पे आई एंटर्ड इनटू दिस पुट बाय, एंड अगर ये 350 होता है तो आई वांट टू एग्जिट, एंड मेरा स्टॉप लॉस इसके लिए रहेगा 180। Hmm. मेरा टारगेट अचीव होने के बाद हर 20 पॉइंट्स पे मेरा टारगेट ट्रेल होना चाहिए विद 10 पॉइंट्स ऑफ ट्रेल स्टॉप लॉस। ये आपने कॉन्फ़िगर एक बार कर दिया यहाँ पे, एंड देन इफ यू कम डाउन एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर कि आपका ऑर्डर पैरामीटर क्या होना चाहिए, वेदर यू वांट टू सेंड द ऑर्डर्स इन मार्केट और इफ यू वांट टू पुट एनी लिमिट ऑर्डर यू कैन डू इट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि दो एनी स्ट्रेटजी, सी द फर्स्ट थिंग इज फाइंडिंग द राइट स्ट्राइक सिलेक्शन, वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन यू वांट टू एंटर एंड व्हाट आर योर एंट्री पैरामीटर। सो देयर कैन बी टू थिंग्स, एक आप यहाँ पे बोल सकते हो कि मेरे को right now the spread is coming 10,000 approx, it's a credit spread so I'm getting 10,000, but I would like to enter only if I get a credit spread of 12,000 rupees, which you can predefine. So whenever you get संजय, two, अपना Mhm, जो आपका जो स्क्रीन है, आई रिक्वेस्ट mhm. यू कि आप उसे और जूम इन कीजिए, क्योंकि जो लोग फोन पे कनेक्टेड हैं दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज द होल स्क्रीन एंड दे आर नॉट एबल टू फॉलो इट. Okay, Guys, I please have. let us know in the comment section if this is visible. हम वेट कर रहे हैं. अगर आपको ये इतना विजिबल है तो प्लीज कमेंट. ऑलराइट संजय, प्लीज कंटिन्यू. हाँ, तो फिर ये आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपका डिजायर्ड प्रीमियम क्या है, कौन से नेट प्रीमियम पे आप एंटर करना चाहते हो, या आपका स्प्रेड डिजायर्ड क्या है। सो यहाँ पे वंस यू से 12,000, सो व्हेनेवर you get minus 240 spread, then you will enter into the market. So your entry is automated. Then you can define कि मेरे if I'm doing multi leg strategy, मेरे को कौन से लेग पे क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखना है, that you can predefine. Then coming down to target parameter, because in my experience entry parameter are easy to define, but exit parameter is something which is very very important, that will only decide whether you are going to make money in the long run or not, because most of the people do mistake while they are entering their exit parameters. So this is very very important. So we have given various options here. You can define your fixed profit, you can define your fixed loss. Let's say in this strategy you can say I would like to have a profit of 7,500 and my overall stop loss is 5,000. So any of these once happen, then your strategy will be auto close. You don't need to be in front of the system. Only one requirement, that when you have any live strategy or when you have started any strategy with modern algos, आपको दिन में एक बार लॉग इन करना पड़ेगा, so that we get a renewed token from 5 पैसा, and based on that we'll be tracking your position. जैसे ही आपके जो प्री डिफाइंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई होंगे, मार्केट में ऑर्डर ऑटोमेटिकली फायर होगा। ओके. अब टारगेट पैरामीटर में वी हैव जस्ट गिवन फिक्स प्रॉफिट एंड फिक्स लॉस, but you can also manage your fixed profit with various options: lock profit, trail profit, trailing stop loss, and local tail profit. You can simply explore these options, they are very simple, and if you have any questions you can contact us and we'll be able to help you on that. So this is what we have in terms of trailing target and trailing stop loss. I'll just zoom out a little bit and then again I'll zoom in once we move to the next option. So I think this is clear. And one more important thing, you can also define your start date and time and end date and time. So this is also a very important factor if you are a regular straddle trader. When you want to start a straddle at 10 o'clock in the morning and you want to liquidate 255, that also you can simply predefine here, and you can also predefine your days of selection, like on which days you want to do this strategy. So this ओके. automation can be done. This automation can be done from a single page. And once you configure your strategy, and once your strategy is, let's say, this zoom in, zoom out is troubling me. So once your strategy you're saved for tracking, you can go to auto strategy. On this page, whatever strategy which you have saved or you have entered, or the strategy which
you want to enter tomorrow, you can save it today, and then once you click on, and once you log in tomorrow, your strategy will automatically start in the market. You can also edit from here, you can also square off from here, and if you want, you can also delete a strategy which you may be just adding for testing purpose, and then if you want to remove, you can remove from here. So this is a Okay. dashboard where you can track all of your auto strategy, what you have saved, and if you want, you can edit any of them, and you can again change your target parameters or any other parameters what you have entered at the time of entering into the strategy. And then once your strategy is executed in the market, आप नेट पोजीशन पे जाके जब आप ऑप्शंस पे जाओगे तो आपका कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे उस स्ट्रैटेजी का ओवरऑल प्रॉफिट लॉस क्या है, क्या रेट पे एंटर करे थे, लेग वाइज ऑल्सो यू कैन सी, इफ यू वांट एग्जिट यू कैन ऑल्सो एग्जिट लेग वाइज। एंड देन वी हैव ऑल्सो गिवन अ यूनिक फीचर दैट इफ यू हैव 5 strategy and you want to run strategy 1 and 2 with the combined profit and combined loss, because क्या होता है, I'll just take 1 minute here. Okay. Nowadays, what I'm thinking, see, on Wednesday and Thursday, these are the two important days. If you want to play on the short side, at the same time, you want to also, excuse me, also have your strategy in a way that if the market moves between 300 or 400 points, end of the day, on Thursday, you'll be able to make some money. So I've been doing one activity like I do. See, if I see what is the trend in the market on Wednesday morning and how do I identify the trend, I'll take 2 minutes only and I'm just sharing what I do using Modern Algos. I go to options, I go to option chain analytics. This I do every Wednesday Sanjay, I'm so morning. sorry, but I'll have to keep telling you to zoom in since people, it's not visible, so people are not able to see it, and we are getting like constantly थोड़े comments आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा Okay. सा zoom in करना पड़ेगा इस पे. मैं एक्चुअली जूम फुल पे हूँ एनीवेज, आई जस्ट ट्राई टू फर्दर जूम इन। Yeah. तो हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, वेडनेसडे मॉर्निंग 10 o'clock आई क्लिक ऑन ऑप्शंस and then we have option chain analytics at Modern Algos. We are not covering this section in this webinar, but I'm just explaining a strategy which I take from Modern Algos on every Wednesday and Thursday. सो ऑप्शन चेन पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 10 o'clock पे क्या ट्रेंड दिखा रहा है मेरे को। आई थिंक जूम इन जूम आउट इज causing the issues to me. ओके, सो आप यहाँ पे जब 10 o'clock आओगे, आई थिंक एवरीबडी इज एबल टू सी नाउ, आई हैव अगेन zoomed in. यहाँ पे राइट साइड में आई सी व्हाट इज द ट्रेंड इन द मार्केट. सो लेट्स से इट इज शोइंग मी न्यूट्रल at 10 o'clock. Hypothetical example. If it is neutral, then what strategy I can do? For that, I go to, so first thing which is very important for an option trader, that he should know what is the trend in the market. So by 10 o'clock on Wednesday, we have 45 minutes of market based on OI data and volume data, various other combinations. That trend is indicated at Modern Algos. उसके बाद मैं क्या करता हूँ, I go into trailing target and stop loss. First, I do, if market is bullish, I enter into a bull call. If market is bearish, I enter into a bear put. एंड देन आई डू इट ओनली फॉर वेडनेसडे एंड थर्सडे। एक बार मैंने वो एंट्री कर लिया, एंड देन अगर वेडनेसडे को मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करता है और मार्केट मोस्टली 50 पॉइंट्स में रहता है, तो मैं वेडनेसडे को एंड ऑफ द डे आई एंटर इनटू अ बटरफ्लाई। दो पोजीशन में लेके आई कैरी फॉरवर्ड दैट टू थर्सडे। अब मैं थर्सडे को क्या देखूंगा कि अगर मेरा मार्केट में जो ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ या मार्केट में जो मेरी दोनों पोजीशन थी उनका मिला के मेरा नेट प्रीमियम क्या चल रहा है। अगर मार्केट मेरे फेवर में रहेगा, ठीक है, अगर मार्केट मैंने बुल कॉल किया, वेंसडे को बुल रन था, वेंसडे ऊपर क्लोज हुआ, थर्सडे भी ऊपर खुला, एंड मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड ले रहा है, फिर मैं क्या करूंगा, मेरा बुल कॉल स्प्रेड और बटरफ्लाई दोनों मैंने एंटर किया है, उन दोनों का मैं कंबाइंड प्रॉफिट डाल दूंगा। Okay. तो उससे उससे क्या होगा कि अगर मार्केट ट्रेंड पकड़ता है
ठीक है। और उसके बाद अगर सडनली मार्केट, जैसे मान लो आप एग्जांपल के तौर पे 17,600 पे अपन बुल कॉल लिए एंड 17,700 पे अपन बटरफ्लाई क्रिएट करें, अगर आप देखोगे तो 17,700 मार्केट आज 130 तक था, एंड टिल दैट टाइम इन फ्रॉम मॉर्निंग टिल 130 ऑलमोस्ट आई कुड सी 2% रिटर्न इन बटरफ्लाई, अगर मैंने मॉर्निंग में भी एंटर किया होता तो। एंड मेरा अगर कंटिन्यू बुल कॉल चल रहा है और मैं कॉम्बिनेशन में मेरा प्रॉफिट स्टॉप लॉस डाल देता हूं, तो दोनों स्ट्रैटेजी मेरे एक साथ एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि दोनों स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं अपसाइड बायस्ड है। So what I'm trying to explain that if you have your portfolio of strategies, you want you and if you want to combine all of them in terms of tracking your profit and loss, that you can do it at Modern Algos by just clicking on your strategy which you are already in live, and you can define your combined profit, combined stop loss. And how do I define combined profit? Simple logic. अगर मेरा 1 लाख रुपए मार्जिन में लगा है, I try to get 2.5 to 3% return and 1.5 stop loss. Accordingly, I simply put the value here and system would compute for me. Whether I'm in front of the system or not, and I don't have to track individually or strategy wise, this system will help me to close in the market. And if somebody had those two strategies from yesterday till today, and if they have configured these two things, then by 130 should be out of both the position. उसके बाद मार्केट जो डाउन हुआ around 150 points doesn't matter to him. So Hmm. this is a benefit. This is a power of algo trading, or defining everything at the time of entry, so that आप market के movement से you will not get influence, which is very very important for any option trader or for any kind of trader. आप market से influence नहीं होना, आपका entry और exit आपका पहले से जब आप एंट्री करते हो उसी टाइम पे जो आपका माइंडसेट था उसी को फॉलो कीजिए, उसी को ऑटोमेट कीजिए, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सॉल्विंग एट मॉडर्न आल्गोस। ऑलराइट Also, सो Sanjay, before we move forward, I'm really sorry. Can you just check on your internet once? क्योंकि थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है. So it would be great if you can check on the internet once. it is showing all four tick to me on my computer. So All right. Fine, we can go ahead. No worries. now let us cover one more product before we go for question and answers. Other thing, what normally we see that 70% or 75% of the time, market is in a consolidation. Market will not have a great momentum, or like market will not have 10 days or 12 days winning streak. And if we have 6 days of winning streak, market closing on close to close basis on upside, then probably 10 or 15 days we will have a consolidation zone. So this is a normal behavior which you can see from the historical data. So how you can benefit in those scenarios, and if you Hmm. are doing some kind of analysis, and if you are like 3 4 years into market and you are trading actively, you are seeing market move, you understand charts pattern, or you basically understand the price pattern, not required to be a proficient in technical analysis. If you can understand what is the trend in the market, whether it's a consolidation, upside, downside, only three things you need to derive. So if suppose market is into 400 or 500 points consolidation and you want to do some kind of scalping in that, how you can auto make your scalping logic, how you can deploy that, and how the system will be tracking for you, let's explore that in our scalping option. So I have increase the font size and zoom. I think it's visible to you, Devanshi. Yes, it's visible. Okay. So let us take an example, what I prepared for this webinar. Let's say I want to do scalping based on future point, up move and down move. So here, if you see, you have scalping based on future point, scalping based on delta change, and you can also do on spot price, that also I will cover. And then we have continuous buy sell. So these are the three options which we are going to cover. So अगर आपको ये लगता है कि मार्केट 17,300 से लेके 17,800 के बीच में रहने वाला है for let's say next 1 week or 10 days, and you are into futures or in options anywhere, like whatever instrument you would like to trade, you can do it from here. मैं आपको फ्यूचर के एग्जांपल से सिखा समझा रहा हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड.
अब सपोज रेफरेंस पॉइंट मतलब अभी मार्केट 17,500 पे है और आपको ये देखना है कि 17,700 से लेके 17,300 के बीच में आपको स्कैल्पिंग करना है। आपको लग रहा है कि मार्केट ने 6 से 7 दिन कंटिन्यू विनिंग स्ट्रीक रखा है, तो उसका डबल टाइम मार्केट कंसोलिडेट करेगा। नॉर्मल नॉर्मल फिनोमेना आई एम टॉकिंग अबाउट। सो अगर मार्केट 10 दिन ट्रेंड में रहता है तो उसके बाद 20 दिन कंसोलिडेशन में रहता है। अगर वो मार्केट डिमांड सप्लाई को मैच करके नया बेस नहीं बनाएगा तो विल नॉट सी अगेन डिमांड पिकिंग अप इन द मार्केट। That's a normal you can say demand supply curve। अभी यहाँ पे आपने आपने ये देखा है कि 17,300 से 17,700 आपके एनालिसिस के बेसिस पे एक जोन होना चाहिए जहाँ पे मार्केट काफी टाइम के लिए रुकने वाला है। नाउ हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस सिनारियो। तो इसमें क्या कर सकते हो, आपकी अपसाइड में आप बोल सकते हो अगर हर 50 पॉइंट के ऊपर मेरा एक फ्यूचर लॉट सेल हो जाना, और जब फ्यूचर लॉट सेल होगा तो 17,550 पे सेल हो जाएगा, 600, 650, 700। और जो लॉट मेरा सेल होता है उसका टारगेट मेरा 30 पॉइंट का है और स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट कंटिन्यूअसली जब आप स्कैल्पिंग करोगे तो 17,500 से लेके 17,700 तक कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगा, तो 550 जाएगा, फिर 520 आएगा, फिर 600 जाएगा, वो अप डाउन होते होते ही ऊपर जाएगा या नीचे आएगा मार्केट। तो इसी 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 स्टेप मेथड में आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर 17,550 जाता है पहला लेग सेल कर दो, उस लेग का टारगेट 30 पॉइंट है, तो आपका तो टारगेट हो गया 17,520, स्टॉप लॉस हो गया 17,765, राइट। 17,665। लाइक दैट the system will be doing it for you. Now how you can configure this at Modern Algos, which is very simple. You go here, This is you say that 565, right, Sanjay? Not sorry 760. Yeah. So that would be 15, 15 का stop loss आपने लगाया है ऊपर, right? 15,565। Yes. Just a typing error, the next one is correct। No problem. तो यहाँ पे आप हाँ. यहाँ पे डिफाइन कर दोगे 50 पॉइंट्स अप, आपको एक फ्यूचर लॉट बाई करना है। आपकी क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हो 15 मल्टीपल ऑफ 50। आप यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम डिफाइन कर दोगे कि 5 टाइम करना है मेरा, एंड यू कैन से माय पॉइंट्स टारगेट इज 30 एंड स्टॉप लॉस इज 15। सेम थिंग यू कैन डू इट इन डाउन साइड। अपसाइड में यू विल बी सेलिंग future, and downside you will be buying futures, and then for each of the leg what is entered based on your up and down move, आपके वो leg wise target 30 और 15 है। तो ये एग्जांपल में क्या होगा कि अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट 17,550 17,600 गया, 550 पे एक लॉट सेल हो जाएगा, 600 पे एक लॉट सेल हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लो मार्केट 570 आता है तो ये लेग एग्जिट हो जाएगा, फिर 650 गया तो मार्केट में एक नया लॉट सेल होगा, फिर 620 आया तो वापस आपका ऑटोमेटिकली बाई हो जाएगा। और रेफरेंस पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बाई चालू होगा 17,500 के ऊपर, सेल चालू होगा 17,450 के नीचे, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पे जो आपने कॉन्फ़िगर किया है उसके बेसिस पे अप एंड डाउन मूवमेंट मार्केट मतलब मॉडर्न आल्गोस सिस्टम पिक करेगा। अब आप बोलते हो कि मेरे को रेफरेंस पॉइंट नहीं चाहिए, आई वांट टू डू कंटिन्यूअस बाई एंड सेल। जो भी जिस टाइम पे मैं स्ट्रैटेजी सेव करता हूँ उसी टाइम से मेरा बाई एंड सेल चालू हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे बाई सेल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही टारगेट और ये सब पैरामीटर जो है आपके डिसेबल हो जाएंगे। इसमें होगा क्या, अभी 17,520 चल रहा है एलटीपी, 50 पॉइंट ऊपर जाते ही एक लॉट सेल होगा, और 50 पॉइंट ऊपर गया एक लॉट सेल होगा, एक 50 पॉइंट नीचे जैसे ही आएगा फिर आपका बाई होना चालू हो जाएगा। वहां पे रेफरेंस पॉइंट से नहीं होगा, वहां पे जो भी आपका लास्ट ट्रेड है उसके बेसिस पे जो भी अप डाउन मूवमेंट होगा उससे कंटिन्यूअसली बाई सेल सिस्टम करता रहेगा। दिस मॉडल कैन बी डिप्लॉयड फॉर इंट्राडे ट्रेड। जब आपको लगता है कि 11 बजे से लेके एक डेढ़ बजे के बीच में अगर मार्केट ने गैप अप लिया है तो नॉर्मली हम देखते हैं कि मार्केट फिर 50 से 60 पॉइंट के अंदर ही कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। हाउ यू वांट टू बेनिफिट फ्रॉम दैट 50-60 पॉइंट मूव दैट यू कैन डिफाइन हियर, एंड डेफिनेटली यू विल हैव टू apply some logic, or you should have some exposure towards consolidation based trading. What we are solving here, we are automating that process. What many people are doing manually also, but in manually you'll have a lot of impact power slippages, and that will eat away your most of the profits. So that issue is solved here. In continuous buy sell, if you do positional, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, इंट्राडे एंड पोजिशनल। अगर आप पोजिशनल करोगे तो क्लोज टू क्लोज बेसिस चलेगा, मीनिंग
आप अगर मार्केट आज 17,500 क्लोज हुआ और आपने डाउन साइड में 50 पॉइंट डाल रखा है, कल 17,400 ओपन होगा तो इमीडिएटली 2 लॉट आपके मार्केट में बाई हो जाएंगे, जैसे ही ओपन होगा बाई हो जाएंगे। सो दैट योर जो भी आपने अपसाइड या डाउन साइड के पॉइंट डाल के रखे हैं, दे वर्क ऑन क्लोज टू क्लोज बेसिस। आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस, राइट Okay, देवांशी? you need Sanjay, explain it once again since two of our viewers found it a little difficult. थोड़ा उनको complex लगा. So this is the जब last. लास्ट में जो फर्स्ट वाला अपन एक्सेल के एग्जांपल से देखे, दैट इज वेरी क्लियर। सेकंड एक क्या रहता है कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको ये है कि रिलायंस अभी चल रहा है एग्जांपल के लिए 2500, और आपको ये है कि रिलायंस 2300 से 2700 के बीच में काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो आपका ये है कि मेरे को कंटिन्यूसली रिलायंस के हर 20 या 30 पॉइंट के ऊपर बाई सेल होते रहना। आपने 2500 पे कॉन्फ़िगर किया और आपने दे दिया कि 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे, ठीक है। जैसे ही वो 2500 से, लेट अस सी हियर, 2500 से 2520 गया तो आपका एक लॉट सेल हो गया। फिर वापस वो 2540 गया तो आपका एक लॉट बाई हो गया, आई मीन सेल हो गया सेकेंड 20 Okay. पॉइंट्स। अब यहां से अगर वो 2520 आता है तो आपका एक बाई हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस बाई सेल, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लास्ट एंट्री है उसके बेसिस पर अप डाउन मूव चलेंगे। जो पहला एग्जांपल था उसमें जब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो रेफरेंस पॉइंट मतलब उस टाइम पे जो एलटीपी था उस पे उससे प्लस माइनस होगा। एम आई क्लियर विद दिस नाउ? Yes. एंड इसमें क्या होता है कि आप जैसे कंटिन्यूअसली बाई सेल तो 100 पॉइंट्स के अंदर भी सम टाइम यू मे बी एबल टू गेट 50 और 60 पॉइंट्स एज अ प्रॉफिट if you are doing continuously buy and sell, though it require a lot of discipline and you need to identify where the consolidation pattern is. So for that you can also use modern algos. You can select your symbols where you want to do it, and you can go to option chain. If it shows neutral trend, you can do scalping. So there are 3 4 clicks which you have to do, and then you can configure here. And if you have any specific questions at the time of deploying, you can just drop a WhatsApp message to us and we'll be able to help you on that. एक फिर हमने ये जो it is not called scalping, it is basically entry parameter with spot, because we have not given number of times option here, but sooner we will also get that here. ये हमने यूजर्स के फीडबैक पे बनाया था कि हमको ये फीडबैक कंटिन्यूसली आ रहा था कि आई डू टेक्निकल एनालिसिस और मेरा ये मानना है कि अगर 17,700 मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। सो मैं वो पहले से कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ कि अगर 17,700 मार्केट ब्रेक करता है तो मेरा उस टाइम पे एक एटीएम कॉल ऑप्शन के 3 लोट आप बाई कर लो। और मेरा ये मानना है कि अगर 17,600 मार्केट ब्रेक करेगा तो मेरे को मार्केट में लगता है कि मार्केट में और वीकनेस आ सकती है, तो आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हो बेस्ड ऑन स्पॉट प्राइस इन योर ऑप्शन पोजीशंस। Right. एंड आप ये डिफाइन कर सकते हो कि मेरा 17,900 का मेरा टारगेट जोन है। अगर 17,900 आता है तो मेरे जो भी 3 कॉल ऑप्शन मैंने बाय किए मैंने लिक्विडेट हो जानी चाहिए। तो दिस इज फॉर द यूजर्स जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, दे नो ये सपोर्ट है, ये रेसिस्टेंट है, ये रेसिस्टेंस है, इसके ब्रेक पे मेरे को ये करना है, तो दे कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर एंड देन दे कैन डिप्लॉय द स्ट्रैटेजी। फिर order parameter, target parameter, as we discussed in trailing target and trailing stop loss are the same, and you can explore those also. Now I will quickly cover 2 more options here, which is adjustment switch and adjustment shift, which you guys can explore because we'll go to Q&A, question and answer session. What you can do in switch, like if you have any target and stop loss basis shifting your leg, like if you want to switch a leg, that if my target has come, then please exit this leg and enter a new leg, that you can manage from switch option. It is based on target and stop loss. If you want to change, if you want to liquidate your existing leg and want to enter into a new leg, you can do it from the switch. And if you want to do this based on the future points move, you can use our shift option, where you can define your future point move. If you select shift, this bottom image will be open,
Here you can say if the market moves by 100 points up, then the leg which you have entered earlier should be exited, and which leg you want to enter, you can define here. One example I will give here, how it is helpful. Suppose you do an iron butterfly, okay? And because I love butterfly, so I normally talk about butterfly only. And I say I want to shift. See, when I do a butterfly, I first ask myself a question that what is my bias towards market? If I'm long towards if my bias is towards upside, then what I do, I just configure here that okay, I have a 17,150 put wing in my butterfly. But if the market is moving upside, then I don't need this 17,150 put into my strategy. So what I ठीक है. can do, I can define that if the market moves up by 100 points, let's say I'm entering at 17,600 a butterfly, and I feel based on my analysis that if the market crosses 17,700, तो मार्केट ऊपर जाएगा. तो उस जब मार्केट ऊपर जाना डिसाइड हो जाता है, तो मेरे को पुट ऑप्शन की जरूरत नहीं है मेरे बटरफ्लाई के अंदर. आई विल ब्रोक दैट पर्टिकुलर विंग. उसको मैं ऑटोमेटिकली कैसे करूं, तो मैं आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि जब 100 पॉइंट्स ऊपर जाए तो मेरा 17,150 का मेरा 17,150 का पुट ऑप्शन सेल कर दो, और यहाँ पे आप क्वांटिटी जीरो कर दो. क्वांटिटी जीरो इसलिए तो उसमें क्या होगा, ये लेग एग्जिट हो जाएगा, कोई नया लेग एंटर नहीं होगा. एक तरीका ये हो सकता है. दूसरा तरीका ये हो सकता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो पुट आपने 17,150 का लिया था उसकी स्ट्राइक आपको ऊपर मूव करते जाना है. 100 पॉइंट्स ऊपर मूव करते जाना है. तो सपोज 100 पॉइंट्स ऊपर गया तो आप बोलोगे 17,150 नहीं, मेरा 17,250 का पुट बाई हो जाना. तो जैसे ही 100 पॉइंट्स ऊपर जाएगा, 17,150 का पुट लिक्विडेट हो जाएगा, 17,250 का पुट ऑटोमेटिकली आपका एंटर हो जाएगा. इस सब से क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट इनटू योर एग्जिस्टिंग पोजीशन टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स एंड इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. सो वो आप ऑटोमेट सिस्टम के थ्रू कर सकते हो. एंड देन again you have all the target parameter, exit parameter, you can manage the entire strategy. तो इसमें क्या होगा कि आप मार्केट मूव के साथ अपने पोजीशंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हुए जा रहे हैं, और नीचे आपका जो भी टारगेट स्टॉप लॉस आपने डिफाइन कर रखा ओवरऑल स्ट्रेटजी में, whichever happens first, system will liquidate your position. So these Okay. are the options we have in Algo features at Modern Algos, and there are other options which anybody can simply use 5 paisa credentials and log into the platform, and then they can explore all the products in equity options intraday. And then if you require to have a specific webinar on any of our products, we'll again talk to 5 paisa team, and I'm sure they'll be providing us one more slot to present other products to 5 paisa clients. Yeah, Devanshi, So over to you. we have definitely put a website here क्योंकि काफ़ी लोगों को थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, zoom in करना पड़ रहा था. So you can actually go to the site as well. Watch the site. आपको उसमें बहुत सारे options भी दिखेंगे. अगर आपको अभी नहीं भी दिख रहा, आप समझ लीजिए. And if you still have any query, definitely post your questions. Sanjay, we can take a few questions right now. Sure, sure, sure. Okay. So सबसे पहले है Siddharth. Hi, Siddharth. Then we have Share Mantra. Hello. We have Jitendra Singh. उनका हमने already ले लिया है question. Then we have Priyam. Uh, Sanjay, can you actually see Priyam का question? Priyam, can we go long options without a hedge strategy, just long call or put short-term intraday trades? Yes, you can do it. See, if you go to Algo Trading, click on trailing target and stop loss, you have naked call, naked put long, naked call short. You can select any of that, and you can also manage a single leg strategy with your target stop loss, trailing target, and trailing stop loss. And mind you, naked call or naked put, if they develop a trend and if you trail them properly, then the returns are really nicer. Because suddenly, if the market turns, like today also, if you had a naked call or naked put, let's say naked call wouldn't have paid you much, but if you had a naked put and if you have trailed that particular thing with every 20 points, then probably
आज का पूरा 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक का आप जो डाउन ट्रेंड था उसको कैप्चर कर सकते थे, एंड वो सिस्टम ड्रिवन रहेगा तो इट विल नॉट इन्फ्लुएंस यू। सो यहाँ से डेफिनेटली यू कैन डू सिंगल लेग स्ट्रेटेजी ऑल्सो। आई थिंक दैट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम प्रियम। Right. We have Dheeraj Thote. Dheeraj, yeah. Sir, many times it happens that as market takes move towards any direction, premium decay starts with same directions. हाँ, Yes. ये करेक्ट है, बट इसमें ये भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम बचा है, कौन से डे पे है, कब हो रहा है। अगर 2 बजे बाद कुछ होगा ऑन एक्सपायरी डे, देन डेफिनेटली द रिएक्शन टू premium will be very heavy, and time decay will also happen faster. But यही same moment अगर मंडे मॉर्निंग द डे द न्यू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट्स अगर मूव होगा तो that impact will not be there. So there are other things also which are impacting. Okay, So so धीरज का सवाल ये है कि who will manage the price premium? Please explain and how to detect that price premium decay will start now. who manage this price premium, मतलब I did not follow the question Okay, even I actually. couldn't understand that. धीरज आप अगर हमें थोड़ा सा elaborate करके अपना question लिख सकते हैं, because जो decay होता है expiry की तरफ वो तो automatically होता रहता है, and थीटा देख सकते हो कि कितना जल्दी वो डीके हो रहा है. So it really depends. We move on to another question. How to trade option. ये हम बहुत बार हमारी फिन स्कूल में भी बता चुके हैं, हम लोग बहुत सारी बार इसको हम कवर भी करते हैं. So Shreya, you need to check out other videos when you want to learn how to trade in options. You have it on 5 पैसे का YouTube channel. Please visit that and you have the links. Uh, what happens where bank nifty has a gap up or gap down? ये आप शायद जब समझा रहे थे संजय तब उन्होंने पूछा था कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो या फिर ऐसा कुछ करते हो हाँ, व्हाट हैपेंस नॉर्मली टर्म्स ऑफ दैट. नॉर्मली नॉर्मली जो मतलब अगर अपन बैक टेस्ट करें एंड इफ यू चेक द हिस्टोरिकल डेटा, जब भी मार्केट एक ह्यूज गैप के साथ खुलता है, एंड दैट इज नॉट अ कॉमन गैप। कॉमन गैप का मीनिंग कि वो थोड़ी देर में फिल हो जाता है। अगर वी हैव अ कंटिन्यूएशन गैप और रनअवे गैप, तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट इमीडिएटली ट्रेंड नहीं लेता है। उस दिन के लिए मार्केट मोस्टली एक बहुत ही नैरो रेंज में रहता है। तो नैरो रेंज में हाउ यू कैन गेट बेनिफिटेड, फॉर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट द स्कैल्पिंग ऑप्शन, बिकॉज वहां पे आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाओ, कॉल नेकेड कॉल लो, पुट लो, आपको कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है मार्केट वहां पे। So recently, if you see, like few when we started this new upside rally, probably a 15 days back, the first 2 days we had a huge gaps, and both the gaps were sustained in the market. But if you see intraday chart, after the market opened, hardly you had any move. Like if you can count 40 or 30 points for the entire day session. So us 30-40 move में what you can do in scalping, that I was referring to that point in time. ऑलराइट. आई जॉइन लेट. संतोष कुमार का सवाल है कैन वी ट्रेल स्टॉप लॉस इन परसेंटेज वाइज इंस्टेड ऑफ पॉइंट्स यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म? Yes, you can do both points and percentage. Okay, Zomato बताइए 141. वैसे we are not taking any questions related to the stock. Ashutosh, this webinar is strictly related to algos. कि आप algos के थ्रू किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं. So please restrict your questions to algo trading अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट हो तो. Once again Sanjay, if you can actually tell our viewers कि अगर आप 5 पैसे ऐप में हो तो वहाँ से मॉडर्न एल्गोस पे कैसे शिफ्ट हो सकते हैं. Yeah, अगर आप you have to come to www.modernalgos. I think my screen you are able to see. One second, I'll just add it. No, you'll have to share it again. Before that, we'll Okay. just take one question. Does your algo trading help in commodity trading, spot futures, and also options, crude, etc.? No, we have not have Okay. gone live in options. I mean commodity options and currency options. But yeah, that's something we should also have to work on those things. All right. So here for just connecting your 5S account, you'll have to click on login,
and click on 5 paisa, and here you can give your credentials, and then once it is successful, once we receive a success token from 5 paisa for your user id, then you will be into the platform, and then you don't need to do anything. You can take any strategy, you can define all of your parameter, and for that particular trading, that trading day will be able to manage everything automatically. And then if you have any strategy which you are uh, carrying forward and you want to auto manage them, next day morning, you just log into the platform and system would automatically start doing computation for you. You don't need to be redefining anything at our end. Okay, thank you. Sanjay, there's one more question. One second, I'll just go back to a layout. There's one more question. Can I add some indicator strategy in this site like RSI level and No, no, not yet. But sooner we'll have rule-based and strategy level backtesting option also at Modern Algos. But currently it is not there. all right. And second question is, can we do paper trading to test our Yes, strategies? yes, you can simply go to our paper trading option, which is, oh my God, again I have to log in. One One second. second. Once you log into the platform, on the home page itself, you'll see a paper trade option where you can create your paper trade strategy, and also you can track them with the live peer. Just give me 1 minute. Okay, okay. We are in. Here you have paper trading. Here you can create your strategy, and once you create, you can save it. Once you save, it will take you to the paper trading dashboard. From there, you can track your strategy. And from here you can also invoke the payoff chart again. You can do various other options, option chain, you can check it from here. And then if you want to deploy directly from here, you can click on trade also, and it will take you to the manual order page. From there you can redirect your orders. Yes, myself Sanjay Kumar, please take my question. Can you? Also, there's one more question saying, can we do intraday stock futures with trailing stop losses? Well, अगर आपको यही करना है, Mr. Srinivasan, then you don't really need, like, the help of Algo. But yes, I'm sure. I think this functionality Yeah. must be there in the 5 paisa app itself. Yes, yes. So this is basically modern algo gives you like makes a whole strategy. आपको किस तरह से strategy करनी है, आप उसमें भी variations कर सकते हैं, उसको customize कर सकते हैं, making a strategy, and these strategies are useful to hedge your losses in markets like today, जहाँ पे लोगों को लग रहा था एकदम तेजी है, finally we had an expiry. तो ऐसे दिनों के लिए आप एक्चुअली लाइक वेडनेसडेज थर्सडेज जैसे कि संजय कह रहे हैं, इन डेज के लिए यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ स्ट्रैटेजी, बैक टेस्ट इट, इट्स फन, understand markets, and then you can implement those strategies in the markets. Absolutely, very right. So we have AC asking, sir अब आपको MACD, RSI, डेमा ये सब आपको लाना ही पड़ेगा. There is like constant Yeah, there are two things which we are, like, many of the users are asking whenever I do yeah. webinars with the various partners. One, to bring technical indicators on the platform. Other is configuring the backtesting module. Yeah, we understand they are really really important, and we are working towards that. But configuring the indicators are very subjective, because I've been like chartist for from last 15 years, and during my CMT also I wrote a white paper. So according to me, TA is very very subjective to an individual. So Yes. those subjectiveness bringing to a programming language and coming to the platform. See, what when we do it, we want to do it in a way that users should have all the options available. It's not just simply configuring RSI and we are having default option of 49 at our end. Users should be having option to even change the parameters also. So, anyways, definitely in a quarter you'll see these options also on Modern Algos. All right. Santosh Kumar, again, due to technical glitches in server nowadays, many algo platforms are squaring off the positions automatically. So, what is the percentage of expecting glitches in your server?
वेल संतोष, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. यूजुअली प्लेटफॉर्म्स पे वो ग्लिचेस नहीं होते हैं. मीन यू नो इट्स अ टेक्नोलॉजी, सो बाय चांस दे आर लाइक वेरी माइन्यूट चांसेस कि कोई भी ऐसे ग्लिचेस आते हैं, बट वो ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है तो आपके लॉसेस भी वहाँ पे कम हो जाते ये हैं. देवांशी, आई थिंक संतोष का क्वेश्चन थोड़ा मतलब नॉट इट्स, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से पुट अप करूं, इसीलिए मॉडर्न एल्गोरिथम आपको ये बोलता है कि आप अपने इनपुट पैरामीटर खुद डालो, आपका एंट्री एग्जिट आप खुद डालो, हम उसको खाली कंप्यूट करेंगे। ये प्रॉब्लम कहाँ होगी, जहाँ पे आप कोई स्ट्रैटेजी को एक्सेप्ट कर रहे हो और वो आपके लिए ऑटो ट्रेड कर रही है, आपका कोई भी इनपुट पैरामीटर वहां पे नहीं डाला हुआ है। अगर आपने खुद ने इनपुट पैरामीटर डाले हैं तो यू नो व्हेन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। If that doesn't happen, then you'll be able to check, come back and check the platform. और यहाँ हम we are not doing anything automated. We are asking you, we are giving all the tools, all the strategies, all the informed decisions. आपको अपने हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर करके डिप्लॉय करना है. So there are very less chances. Yeah, there may be technical glitches in terms of connectivity issues. In sometimes we are not able to connect to broker API, or sometimes our technical our connectivity goes down. So वो तो मतलब 200 दिन में से 2 या 3 दिन तो होगा ही होगा. In the world, nobody can save those 2 3 days. So I don't say that it's 100% proof, but yes, you can manage various things automatically, and that will definitely help you in the long run. All right. And lastly, Share Mantra, this is the last question we are taking. Is it possible to exit and enter one leg of straddle and repeat on repeat basis till the profits are met? Yes, sooner you are going to have that option. That's going live in our build in the next week. That is called re-entry. So what happens in that, like if you put a stop loss to a particular leg, and once the stop loss is triggered, and once your entry price again comes, you want to enter. Like there are combinations of various entry points we are giving to the user, 5 6. So share mantra, I would definitely see like by next week you should have that option live in Modern Algos. Great. So that is it. Thank you everyone for joining us today and understanding. Thank you, Sanjay, for joining us today and explaining. This is it. Thank Have you, a very good Devanshi, for having evening. us. Yeah, thank you very much. Bye bye, Sanjay. Yeah, bye bye. Thank you, guys.